Pathshala session. So today is a very, very special session. Like it's not like any other special session. Today is like an extra special session. You know why? Yes, because today is the fourth Thursday of the month, which means it is the investor special session day. And apart from that, why it is special? Yes, we all know that. 74 years back, this was the day when the Indian Constitution came into effect. Yes, and since from then and now, there has been tremendous growth and development in our country, and we are all proud about it. So, wish you a very happy Republic Day on that. And we are so glad that we could have this session on such a special occasion. And we are in fact connected like all across the country, from different parts of the country. We are connected today at this platform. That shows the unity and the spirit within amongst all of us. So on that note, we will get started with the session. However, before we begin with any session, we have this ritual at Next Level to say our prayers. So what are these prayers? These prayers are things which we believe in, things which we swear by, and which we follow on a day-to-day basis. So yes, we will get started with the prayers. So I would request you to join me in that. Okay. So I would request you to place your right hand on your heart and say along with me. We are on a mission to educate people about financial literacy and empower them to live a financially confident and stress-free life through our scientific money management process. We are in the world's best and noble profession because we prosper when our clients prosper. We are followers of client first, win next, and win principle. We always ensure that our clients get the right amount of money available to them at the right point of time through our scientific money management process. We follow all professional ethics with full integrity. We have a clear intention to create wealth and abundance so that our clients can achieve all their dreams, goals, and needs. The only way we can become successful is by adding massive value in the marketplace to our clients, to our organization, and to all our stakeholders. We always inspire, empower, and make a difference in people's lives, wherever we go and whomever we meet. We work because we choose to and not because we have to. We empower people to live their desired lifestyle by helping them to achieve financial freedom. Okay, friends, with this, we are all set to begin with today's session. But before I leave you for the session, I wanted to tell you this. Today, there's another reason why it is a very special day. Can you guess why? Okay, so today is Basant Panchami, which is also known as Saraswati Puja. This is the day we offer prayers to Ma Saraswati, who is the goddess of knowledge and wisdom. So whenever we think about knowledge and wisdom, what is that one thing which comes in our mind? Like, I'm sure this would be that one thing which comes in your mind, and it definitely comes in my mind always. So that is books. Yes, because books is the way we gain knowledge and wisdom, and not now, since 100 years, last 1,000 years, that has been the one medium through which we have gained knowledge and wisdom, and we still continue to do that even now. So what if I say today the speaker who we have, and today the day of Republic Day and Basant Panchami, the speaker who we have is someone who is on a mission to make India read. Yes, friends, today the speaker who we have is none other than our very own booklet guy, Mr. Amrut Deshmukh. He is also a TEDx speaker and has won the Youth Icon Awards, and he is a really, really inspiring personality. And
today he will be imparting with us knowledge and wisdom on a very, very interesting book. So this book is actually very interesting, and the title is also very exciting. Yes. So the title is The Surprising Power of Ideas That Don't Make Sense, Alchemy. So it is going to be a really, really exciting session, I can tell you that. And with this, we are all set, and I would request Amrut sir to come on the screen. Has Amrut sir joined? Yes, yes. Yeah. Great. So we have Amrut sir in. Hi. Hi, Shreya. Can you hear me? We're so happy to have you on this day and such Thank a you so much. special day with us. Awesome. Awesome. Thank you so much for inviting me once again. And I always look forward for the fourth Thursday of every month. Very excited to talk about a book with you guys. And then the interaction we have is the most exciting part. Well, happy Republic Day. Another auspicious day to discuss a very unusual book. The author, just by looking at that author, you will come to know that he's a crazy, crazy guy. A very 100 kg fat guy, funny face. There are many YouTube videos of this guy called Rory Sutherland, the author of the book. Today, the book which I'm going to discuss, a very beautiful golden book. I think for the first time I've seen a golden color book. Yeah, and it says Alchemy. It's not Alchemist. Alchemist is a very famous fictional work of Paulo Coelho. That's not the book. This is Alchemy. Now, the surprising power of ideas that don't make sense, written by Rory Sutherland. The book is full of successful ideas which sounded utter stupid when they were pitched for the first time to their friends or investors. Yeah, investors turned down the offers. The founders of the idea were ridiculed, yet they pursued the idea and they become hit. By the end of the session, you will be convinced that if you come out with an idea and you share that idea with your friends, with your boss, with your colleagues, with your investors, and if 8 out of 10 people say, no, it's a bad idea, don't go for it, then there is a high chance that this idea will work. It's called as contrarian theory. Why it will work is because 8 out of 10 people are saying, no, it's a dangerous idea, it's ridiculous, it's foolish, don't get into it. That means it won't be thought by any other person. It is unusual. So you are already in a blue ocean strategy where you will not be competing with any other person. Okay, you will be your own category. And second, when the same idea must be pitched by some other person in another corner of the world, he will be told the same thing by his friends. It's stupid, it's a stupid idea, don't go for it. So you are safe. So that's the funniest part of stupid ideas. And for example, if a 16-year-old guy, a young adolescent, a teenager, comes to you, say 10, 15 years ago, and says that I have an idea. And with this idea, I'm going to own 1/3 of the world's population. आप बोलेगे अच्छा ऐसा क्या idea बताओ. And this little boy says that my idea is to share photos online. और आप बोलोगे उसमें कौन सी बड़ा आइडिया है, ये क्या sharing photos online? Fine, it's not a pain point. So if I'm not able to share my photos with my sister who lives in US, it's not a pain point. Fine, it's an inconvenience. I will have to print the photos, courier it to all the way to US. Then my sister will receive it by courier and she'll open and smile by looking at the photos. That was the tradition. But this guy was so determined that no, with this idea, sharing your photos online with your friends and family, I'm going to rule the 1/3 of the world's population. Do you know who that guy was? Any guesses? This stupid plain vanilla idea. Any guesses? Who is this guy I'm talking about? Facebook. Yes, Ronak. He is Mark Zuckerberg. So see, the idea was not great. A mediocre idea
executed well becomes a hit. A super duper idea not executed well becomes a flop. In short, ideas don't change the world. Yes, हमको होता ना, ideas change the world. No, ideas are useless. Execution of ideas change the world. Varna, thousands of ideas come to our mind on toilet seat every day. How many of us actually work on those ideas when we are out of the toilet? That is important. Ideas are useless. And so, which is the most successful, profitable tech company in the world? And not coincidentally, the most profitable, successful tech company in the world has the maximum number of failed features on its app or website. Any guesses? A company, a number one tech company, the richest tech company, purely tech company, which has maximum number of failed features, yet it is the top tech company, or maybe amongst top three. Yeah, it's again Facebook. No, it's not Microsoft. It's Facebook. Now you'll be surprised that why am I saying that it has got maximum number of failed features? Do you remember 10 years ago, Facebook had a dislike button? Initially, like button bhi tha, dislike button bhi tha, which was an utter disaster. It was a blunder step taken by Facebook, because if I don't like Vikas photo on Facebook, I'll just do nothing. Why there should be a dislike button to highlight him? और फिर हमें झगड़ा हो जाएगा ना? If I click on the dislike button on Vikas' so-called best picture, he will start hating me. And gradually the hatred started spreading on Facebook. Later on they realized that dislike button की जरूरत नहीं है. There should only be a like button. और अगर मुझे like नहीं करना है तो I'll do nothing. Right? There didn't be any dislike button. So ऐसे उन्होंने, they tried, failed. No, they failed fast. Failing fast is the new mantra, especially in this tech world, where creating a new feature and giving it to the market has got a least cost. Unlike a traditional factory, जहाँ पे आपको कुछ ड्रिंक बनाना है, करोड़ों पैसा खर्च करना है, उसका प्रोटोटाइप नहीं बन सकता है until it goes to the consumer and they taste it, you can't take feedbacks. वैसा नहीं. In this tech world, it is very easy to come out with ideas, execute them with least time, effort and money, and quickly iterate it, take feedback from people कि कहाँ पे लोग सबसे ज्यादा engage हो रहे हैं, वही features हम रखेंगे, जहाँ पे लोग engage नहीं हो रहे वो features निकाल देंगे. And this is the mantra of the Silicon Valley these days, and that's why they keep coming up with new features every month. जो feature चला retain हुआ, जो feature नहीं चला निकल गया. The crux of this book is, if you ask me to summarize the book in one line, is that be a contrarian, go against the wave. In fact, stock market में भी यही होता है कि if you follow what 90% of the people are seeing, it is not coincidentally that 90% of the people don't make money. Only 10% of the people in stock market make money. So we have to do exactly the opposite of what most of the people are doing. But it takes a lot of courage, not intelligence. It takes a lot of audacity to take that bold step to go against the wave. Okay, I'll give you a very good example that the author talks about. When Google came out with this search engine for the first time, Larry Page and his friend, in those days, I think it was around almost 15, 18 years ago, maybe, the biggest revenue model for these tech companies, for the website owners, उस वक्त एंड्रॉइड था नहीं, तो एप्स नहीं थे, सिर्फ वेबसाइट्स थे. तो उस वक्त सबसे ज्यादा पैसा कमाने का जरिया ये था, the maximum time spent by the visitor on the website. तो जितना टाइम ज्यादा स्पेंड किया जाएगा वेबसाइट पे, उतना एड रेवेन्यू मिलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि जितना मैं www.yahoo.com पे टाइम स्पेंड करूंगा, उतना एड वालों को मैं बताऊंगा कि भाई इतने फुटप्रिंट्स है, रोज लाखों लोग मेरे यहाँ पे आके ऑन एन एवरेज 15 मिनट टाइम बिताते हैं, और इसलिए हम आपको इतना इतना चार्ज करेंगे to put in your ad on my website. This was the most safe, tried and tested revenue model in those days, like a decade ago. And Google search engine
did exactly the opposite. Joki, now if you search something, it gives you 1,000 website names, which is encouraging you to hop from one website to another quickly without spending much time on a website. And so obviously everybody said, no, it's a foolish idea. It is direct attack on the revenue stream. So ये नहीं चलेगा. Are you getting my point? And if you and I were in that position 10 years ago, हम भी बोलते कि नहीं भाई, ये तो tried and tested revenue stream है. सबसे ज्यादा टाइम अगर बिता नहीं रहे वेबसाइट पे, और आप ही बता रहे हो कि दूसरा वेबसाइट भी अवेलेबल है. तो Google himself is encouraging the visitors कि there are 10 websites, you can check any of them. So you're encouraging their behavior to hop from one website to another and not asking them to spend maximum time on one website. I hope you are getting my point. Yeah. And it was very natural that everybody laughed at this idea. They were ridiculed, but these two guys were determined कि करके देखते हैं ना. What is the downside? खर्चा कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, टाइम एफर्ट जो भी है, करके देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा. एंड आई लव सच पीपल हु से करके देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा. आई मीन हैट्स ऑफ टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस. वो भी ऐसा बोलते थे कि नो, देखते चलो जाते जर्मनी, जो होगा देखा जाएगा, एकला चलो रे. एंड आई रियली लव सच पीपल. ओके, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस, ये तो गूगल भी आपको सिखा देगा, बट ये जो बोल्डनेस है कि विद इन द लिमिटेड इंफॉर्मेशन, अनसर्टेनिटी, फियर, फिर भी आप करने की कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, तो पता नहीं आगे क्या होगा. राइट. एंड सो कमिंग बैक टू गूगल आइडिया, सी व्हाट हैपेंड. दे केम आउट विद अ कंप्लीटली न्यू आइडिया कि ठीक है, हम फर्स्ट पेज पे पैसा नहीं कमाएंगे. इफ सपोज विकास वांट्स टू गो टू महाबलेश्वर फॉर अ फैमिली ट्रिप, तो वो गूगल पे जाके क्या ट्रिप टाइप करेगा? गुड होटल्स इन महाबलेश्वर. राइट. तो गूगल वालों को ये क्लिक हुआ कि विकास इज इंटरेस्टेड इन महाबलेश्वर, ही हैज सम प्लान्स टू विजिट महाबलेश्वर. तो उसके बाद जब वो विकास सर्च इंजिन पे वो टाइप करेगा, एंटर करेगा, वेबसाइट्स के नाम आएंगे, देन दिस इज कंप्लीटली न्यू रेवेन्यू मॉडल टू टारगेट ऑल द होटल ओनर्स इन महाबलेश्वर कि देखो, वी आर गिविंग यू अ वेरी रेलेवेंट कंज्यूमर, प्रोबेबल कस्टमर. Suddenly everything changed and relevant marketing was introduced by Google. Relevant marketing. अगर दारू का बॉटल का एड एक मॉन्क को दिखा के क्या फायदा है? एक मॉन्क और साधु कभी दारू पिएगा नहीं, तो उसको एड दिखाने का फायदा क्या है? या एक लोअर मिडिल क्लास इंसान को मर्सिडीज का एड दिखाने का फायदा ही क्या है? He is never going to buy it, right? And so Google came out with the filtered audience or relevant ads, and it changed the entire ad world. It changed the entire ad world 360 degree. So see, अगर उनको वो had they given in to the pressures कि नहीं, ये तो फालतू आइडिया है, नो वेबसाइट पे टाइम नहीं बिता रहे लोग, तो फिर आज गूगल ही नहीं होता. क्रेजी, राइट? सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से कि जितने आपको नो आएंगे, तो आपको और खुश होना है. आपके आइडिया के लिए जितने नोज आएंगे ज्यादा, यू हैव टू बी हैप्पी. चलो, कोई और ट्राई नहीं करने वाला है, आई एम सेफ, सो लेट मी ट्राई इट आउट. ठीक है, फेल भी हो सकता है, इट्स नॉट अ गारंटी दैट इट विल सक्सीड. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया इज अबाउट टेड टॉक्स. टेड टॉक पहले शुरू में सिर्फ फिजिकल टेड टॉक्स थे, और लोग पैसा भर के वो टेड टॉक्स देखने को आते थे. सो दोज हु डोंट नो व्हाट इज टेड टॉक, eminent personalities come on the stage and speak for 18 minutes about their ideas, about their story. It could be on any facet of life. And people used to buy tickets, $10, $100, और वहां आके वो देखते थे. And then एक बंदे ने आइडिया निकाला, टेड टॉक का एक फ्रेंड था जिसने वो शुरू किया कि लेट्स शूट दिस टेड टॉक्स एंड पुट इट ऑन यूट्यूब फॉर फ्री. एवरीबडी सेड, पागल हो क्या? जो पैसा Friends, I think we're facing a small network issue. So Amrut should be back in a while. Yeah. Yeah, I'm audible. I'm back. Sorry, there was some glitch. Yeah. Okay.
You'll have to unmute. Yeah. Am I audible? Audible. Perfect. तो उसने एक क्रेजी आइडिया लाया कि जो शो देखने को लोग पैसा भर के आते हैं उसी को हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालेंगे। सबने बोला कि ये तो क्रेजी आइडिया, फिर लोग पैसा भर के क्यों आएंगे, फिर सब कुछ अगर फ्री पे मिलेगा यूट्यूब पे। बट दे सेड ओके, करके देखते हैं। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, because more and more people came to know about TED Talks because it went on internet, it went on YouTube, TED.com पे सब डालने लगे वो शूट करने के बाद। आफ्टर 2-3 years एक टिकट $10,000 को गया, एक बार $10,000 का एक टिकट गया। तो हम जो बोलते हैं कि अगर हम वो फ्री में देंगे तो लोग पेड के लिए क्यों आएंगे, उस पर ये एक डायरेक्ट अटैक है। आई एम नॉट सेइंग दिस विल वर्क इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, but it's a very good example of going contrarian, of going against the normal traditional conventional ideas. Another was a very good example of Airbnb. आपको पता है Airbnb क्या है? तो ये दो लड़के थे, क्या हुआ था, वो एक शेयर्ड रेंटल अपार्टमेंट में रहते थे और 2 महीने का भाड़ा वो नहीं पे कर पा रहे थे। तो इट वॉज इन एरियर्स एंड लैंडलॉर्ड वॉज नॉट हैप्पी विथ इट और बहुत मुश्किल में थे वो दोनों। और उनको पता चला कि उनके एरिया में कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है किसी बिजनेस का, और पता चला कि वो इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस है कि अभी जो वहाँ पे आने वाले उनको रहने के लिए जगह नहीं है उस एरिया में, सब होटल्स बुक हो गए। तो उन्होंने सोचा कि हम अपना जो घर है जो भाड़े पे लिया है, वी विल क्लीन इट, चकाचक उसको करेंगे एंड देन वी विल स्प्रेड द वर्ड कि आवर रूम्स आर अवेलेबल फॉर यू। और तुरंत वो हिट हो गया and they could pay the rent for last 2 months. And then they came out with an idea, how about, so Airbnb is air bed and breakfasts, ऐसा वो शुरू का नाम था, air bed and breakfast, so Airbnb बाद में उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। Now tell me, दो लड़के आके बोलते हैं कि एक स्ट्रेंजर को आप अपने घर पे पनाह दोगे क्या? कोई मेक्सिको जापान से कोई टूरिस्ट आ रहा है इंडिया में और वो चाहता है कि आपके घर में रहे, आपको थोड़ा सा पैसा देगा या फिर आपके घर के काम में हाथ बटाएगा, एंड फिर कल आप जब जाओगे यूके में, स्पेन में, फ्रांस में, तो आप किसी के घर पे रुक सकते हो। सबने बोला क्रेजी, कोई स्ट्रेंजर को अपने घर पे कौन पना देगा, कितना बड़ा रिस्क है, घर में फैमिली होते हैं, राइट? इट वॉज अ क्रेजी आइडिया, अ कंप्लीट बिग नो। बट यू नो व्हाट, टुडे Airbnb is such a hit idea. All the budget tourists जिनको 5 स्टार में या होटल में रहने के लिए पैसे नहीं होते पर उनको घूमने का बहुत शौक है, द हिप्पीज जो अकेले घूमते हैं फैमिली के साथ नहीं, दे ऑल गो फॉर Airbnb. दे डोंट बुक रूम्स इन 5 स्टार होटल्स और 3 स्टार होटल्स। और सब लोग, अभी एक कल्चर हुआ है कि सपोज मैं मैक्सिको पे जाके किसी के घर पे रहा, वो 4 साल के बाद जब इंडिया आएगा तो मैं उसको मेरा घर दूंगा रहने के लिए, एंड दिस इज हाउ Airbnb इज वर्किंग। What a non-traditional, unconventional idea that broke all the old traditions. Yeah, and people are welcoming strangers. In fact, stranger होते ही नहीं है वो, क्योंकि बाद में it becomes more of a friendship. And Airbnb acts like a medium. It has created a culture of good tourism, honest tourism or personal tourism. एक इंटरेस्टिंग लाइन है इस बुक में, चेंज इन परसेप्शन इज वर्थ 80 IQ पॉइंट्स। मैं लाइन पढ़ के बोला ये कि ऐसा क्या बोल रहा है, चेंज इन परसेप्शन इज वर्थ 80 IQ पॉइंट्स, मतलब क्या? तो उसने सिंपल एग्जांपल दिया है, और मैंने भी, वो बोलता है कि अगर आपका दृष्टिकोण चेंज होता है किसी चीज की तरफ, किसी इंसान की तरफ, तो इट इज एज गुड एज 80 IQ पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस घर में रहता हूँ ना, इट्स एन इंडिपेंडेंट हाउस, इट्स नॉट अ बिल्डिंग ऑफ मेनी पीपल, ओनली मी एंड माय फैमिली लिव्स इन दिस, सो मोर ऑफ अ इंडिपेंडेंट हाउस। इट्स अ 2 फ्लोर बिल्डिंग, ओके, और उसमें कोई एलिवेटर नहीं है, देयर इज नो लिफ्ट इन इट। और आई यूज्ड टू एनवी ऑल माय फ्रेंड्स who live in a building with lifts or elevators. But when I changed, जब 2-3 साल पहले, I took fitness very seriously. मैं बहुत मोटा था पहले, I was overweight by 15 kg. Then I realized the importance of health, that if I want to appeal to the youth, first I should look young. बुकलेट गाय की जगह में बुकलेट अंकल दिख रहा था जब मैंने खुद को आईने में देखा।
And then I decided that I should lose weight, gain some muscles, have some six packs, uh, take back the health in my control. And things are now working well. So jab health became my top priority, suddenly a building without an elevator became a free gym. Now, instead of envying my friends who lived in building with elevators, I pity them. Then I understood the power of this line, that change in perception is worth 80 IQ points. Are you getting my point? कि बस बिल्डिंग वही है, लिफ्ट भी नहीं है, दोस्त भी वही है, उनके बिल्डिंग पे लिफ्ट है, माय माइंडसेट चेंज होगा completely, it is worth 80 IQ points. So change in perception is worth 80 IQ points. तो इसमें से मैंने एक हाई लेवल कंक्लूजन क्या निकाला कि बात उस चीज की नहीं है, वो दृष्टिकोण की है कि हम कैसे उस चीज को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक फटी हुई जीन्स इज स्टाइलिश, पर अभी तक फटा हुआ सॉक्स इज गंदा, इज डर्टी, इज नॉट स्टाइलिश. Maybe give me 5 years and I'll make fata hua socks as stylish by changing the perception. और मेरी फटा हुआ बनियान, जब बनियान पे जो होल्स रहते हैं तो चीप दिखाया जाता है. हालांकि जीन्स तो बाहर दिखती है, सॉक्स और बनियान तो अंदर रहता है, फिर भी उस फटे हुए रहते हैं तो वी फाइंड इट चीप. बट फटे हुए जीन्स को वी फाइंड इट कूल एंड स्टाइलिश. इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. चेंज इन परसेप्शन इज वर्थ 80 IQ पॉइंट्स. एक बड़ा सा मैंने फॉर एग्जाम्पल एक और परसेप्शन की बात छेड़ता हूँ. अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, कुछ इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा टॉक चल रहा है, एंड मैंने कॉफी मग लिया और कॉफी कॉफी पीते पीते मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे हाँ एकदम स्टाइलिश है ना, एकदम अच्छा लगता है. पर वही अगर मैं हाथ में केला लूंगा और केला खाते खाते आपसे बात करूंगा, अब सब लोग हंसने लगेंगे, राइट? गिव मी 5 years and I'll make eating banana look cool by changing the perception, by appealing to the youth that having banana while a public talk or an interview is also cool. If having a mug of coffee or tea is cool, then banana is also cool. Or maybe even sitting on a chair this way is okay. पर अगर मैं ऐसा बैठूंगा, ऐसे बैठूंगा, आप सब लोग हंसेंगे, राइट? जैसे सब लोग हंस रहे, आई नो, बट maybe give me 5 years and I'll make this look cool. In fact, this is the natural position of a human being. Kursi, sitting on the chair is not natural, okay? This is the squat position is natural. अब देखोगे बच्चे जब शुरू में 2 साल के रहते तो कैसे बैठते खेलने के लिए, दे सिट इन दिस पोजिशन, और फिर हम उसको बोलते छी ऐसा नहीं बैठते, मांडी डाल के बैठो, कुर्सी पे बैठो. एक्चुअली वो गलत है. दिस इज द मोस्ट नेचुरल पोजिशन. सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. Another big idea I learned from this book is check what people do and not what they say. I repeat, observe what people do and not what they say. We rarely know ourselves. हमको जो हम जो करते हैं ना और जो बोलते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत साल से कोई भी मुझे अगर पूछता था कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो मैं बोलता था व्हाइट. और एक दिन क्या हुआ, मैं एक दोस्त आया था मेरे घर पे रहने को, और मैंने बेडरूम में उसके लिए मैं कुछ चादर विदर बिछा रहा था, तो मेरा वार्डरोब खुला था. सो ही टुक अ लुक एट माय वार्डरोब एंड बोला, अमृत तू हमेशा बोलता है कि तेरा कलर फेवरेट कलर व्हाइट है, पर तेरे तो घर में वार्डरोब पे सब ग्रीन कलर के टी शर्ट्स दिख रहे हैं, सब अलग अलग ग्रीन के शेड्स दिख रहे हैं, ऑलिव ग्रीन दिख रहा है, ऐसे कैसे? एंड दैट वाज द शॉक ऑफ माय लाइफ कि हो इज सो राइट. मैं बोल रहा हूँ इट इज माय व्हाइट इज माय फेवरेट कलर, बट आई एम बाइंग ग्रीन कलर क्लोथ्स. इनफैक्ट देखो अभी भी मेरा ये लाइट ग्रीन कलर का शर्ट है, देखो. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर सर्वे लेता है, किसी मॉल के बाहर आदमी को खड़ा करता है और मैं मॉल में एंटर कर रहा हूँ और मुझे बोल रहा है कि सर ये सर्वे फॉर्म भरो, उसमें लिखा है कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, मैं लिखूंगा व्हाइट. बट एक्चुअली व्हेन आई गो आई विल बाय ग्रीन. और वो सर्वे के बेसिस पे दे विल टेक एक्शन, मैन्युफैक्चर मोर व्हाइट कलर टी शर्ट्स. आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट. और पूरा वो सर्वे का जो मेहनत है सब फ्लॉप, सब वेस्ट.
इससे क्या हमको सीखना है कि यू डोंट डू मार्केट रिसर्च बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू पीपल. They will not answer they will not answer what they are going to do. They will answer what they think they are going to do. What they think or say is most of the time different from what they do and act. Very interesting concept, na? I was like, my mind was blown by reading this. Yeah. For example, मैं आपको सवाल पूछता हूँ. आप सब लोग ओला उबर कौन कौन यूज करते हैं? जस्ट हाथ ऊपर करो. कभी ना कभी आपने ओला उबर का सर्विस यूज किया है? सबने किया है, राइट? मुझे बताओ कि क्यों. अभी पहले तो क्या जमाने में था, टैक्सी रिक्शा हम रास्ते पे रुक के टैक्सी वगैरह हायर करते थे. अभी हम घर पे बैठ के ऐप पे ओला उबर बुक करते हैं. अभी जैसे ओला उबर आए तो हमने पुराना स्टाइल छोड़ दिया. हम रास्ते पे जाके टैक्सी नहीं ढूंढते हैं, हम घर पे बैठ के करते. व्हाई डू यू थिंक यू हैव स्विच्ड योर बिहेवियर सो सब्सटैंशियली, और अभी आप ओला और उबर से ही कार राइड लेते हो और ट्रेडिशनल बिहेवियर आपने अबेंडन किया? व्हाई? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द रीजन? कैन एनीबॉडी आंसर इट? Convenience. Ronak says convenience. Okay. If you want to speak, you can unmute and say. It's personal car with driver with minimum. Okay. Fine. Should not wait and bargain. Okay. This is a very interesting answer. No capex. Okay. Okay. Now see, I am this is the best example. It is easy. Vijay is saying it is easy. Fine. Okay. सबने अपने अपने reasons दिए. ये एग्जैक्ट यही रीजंस इस बुक में भी बोला है कि जब ऑथर ने सबको पूछा कि व्हाई डू यू यूज ओला उबर, व्हाई डू यू फाइंड इट मोर बेनिफिशियल? सेफ्टी, फाइन. बट यू नो, यही है कि हमको लगता है जिसकी वजह से हम ओला उबर हायर कर रहे हैं, पर असली रीजन कुछ अलग है. और वो असली रीजन किसी ने अभी नहीं बोला जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा. डू यू नो द रियल रीजन? द रियल रीजन, किसी ने बोला ना कि टाइम सेव होता है. ये तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. ओला उबर को हायर करने में शायद उतना ही टाइम लगता है जितना हम फिजिकल रास्ते पे खड़े होके जब हाथ दिखा के टैक्सी हायर करते थे. कोई बड़ा टाइम सेवर नहीं है. हमको लगता है कि वो टाइम सेव कर रहा है हमारा. बट क्यों हमको अच्छा लगता है ओला उबर? बिकॉज आवर ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन हेट्स अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी. जब हम रास्ते पे खड़े होते हैं और टैक्सी की वेट कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए भी वेट करते हैं, हमको पता नहीं कि हमको टैक्सी मिलने वाली है कि नहीं. वी हेट अनसर्टेनिटी, एंड व्हेन वी स्पेंड दोस 2 मिनट्स इन दैट अनसर्टन एटमॉस्फियर, वो 2 मिनट भी 2 घंटे जैसे लगते हैं. वेयरएज ओला के ऐप में मुझे पता है कि ये बंदे को 15 मिनट लगने वाले. आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर 15 मिनट्स, बट व्हेन आई नो that after 15 minutes I'm going to get the car, I'm okay, because there is a clear certainty, there is a predictability element. Are you getting my point? And we are relaxed. तो 15 मिनट मुझे पता है मुझे क्या करना है. चलो मुझे 1-2 घर के काम निपटने हैं. बाय द टाइम वो गाड़ी मेरे घर के नीचे आ जाएगी. अभी ये रीजन किसी ने भी नहीं दिया. आर यू कन्विंस्ड कि दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी लाइक ओला उबर? कि वो 30 मिनट्स के बाद भी आएगा, चलेगा मुझे. नाउ आई नो कि 30 मिनट्स के बाद मुझे डेफिनेटली कार मिलने वाली है, तब तक मैं मेरे बाकी के काम कर लूंगा. व्हाट एन अमेजिंग इनसाइट. सो इज अ वेरी क्लियर. वही अगर ओला वाले ने अगर सर्वे लिया रहता और हमको पूछते कि आपको क्यों ऐप के अंदर अगर कार हायर करनी है तो आप क्या देखोगे, तो आप बोलोगे टाइम सेविंग, फला सेफ्टी, फलाना फलाना, जो आपने अभी आंसर्स दिए. पर ये आंसर कोई नहीं देगा, राइट? तो हेनरी फोर्ड ने जब पहली बार कार का आविष्कार करने का सोचा, और वो बोला कि अगर मैं लोगों को पूछता कि आपको क्या चाहिए, भी कार ये कंसेप्ट ही नहीं था उस वक्त. घोड़ा गाड़ी चलते थे पहले. हाँ. तो अगर हेनरी फोर्ड लोगों को पूछते कि तुमको अभी क्या चाहिए घोड़ा गाड़ी के आगे, तो लोग बोलते फास्ट घोड़ा गाड़ी और तेज दौड़ने वाले घोड़ा गाड़ी. इसलिए हेनरी फोर्ड उसके चक्कर में पड़ा ही नहीं कि अगर जिन लोगों को पता ही नहीं है कार क्या होती है, उनको पूछ के फायदा ही क्या है. वो ज्यादातर बोलते हैं कि चलो और तेज दौड़ने वाले घोड़े चाहिए हमको, राइट? आवर माइंड कांट थिंक बियॉन्ड मार्जिनल इनोवेशन. मार्जिनल इनोवेशन मतलब 1% इनोवेशन, वेरएज कंप्लीट ब्रेक थ्रू इनोवेशंस आम लोगों के दिमाग में नहीं आते हैं.
like a car. घोड़ों के जमाने में कार लाना was a breakthrough innovation. So कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि ये सर्वे फॉर्म्स पे सवाल पूछ के उसके ऊपर डिसीजन लेना इज वेरी वेरी डेंजरस. डोंट ऑब्जर्व व्हाट पीपल से, ऑब्जर्व व्हाट पीपल डू. राइट. एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस मैंने पढ़ा. वी टेक डिसीजंस इमोशनली एंड ट्राई टू जस्टिफाई देम लॉजिकली. आई रिपीट, we take decisions emotionally and try to justify them logically. मतलब क्या, एक एग्जांपल देता हूँ. आप डीमार्ट में ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हो, पूरा आपका ट्रॉली भर गया है और अभी आप कैश काउंटर के पास खड़े हो. तो कैश काउंटर के पास कुछ टॉफी चॉकलेट या कुछ था और आपने उसको ले लिया. चलो ये थोड़ा बच्चों के लिए लेते, मेरे लिए ले लेते. नाउ हम एक्चुअली वहां पे इमोशनल डिसीजन ले रहे, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड डिसीजन फटीग. यू नो व्हाट इज डिसीजन फटीग? किसी ने सुना है ये टर्म डिसीजन फटीग? मतलब क्या कि पूरे मॉल में मैंने शॉपिंग की, आई हैव टू टेक लॉट ऑफ डिसीजंस कि कौन सा ब्रांड लेना है. अभी ये होने के बाद मुझे उस आयल में जाके ये खरीदना है, फिर तेल का डब्बा लिया, फिर डिटर्जेंट पाउडर लिया, फिर कुछ पल्सेस लिए जाके, फिर नो चीज लिया, बटर लिया, ऑयल लिया. ये किसमें अपना ब्रेन बहुत ड्रेन हो जाता है डिसीजन ले लेके. इट ड्रेन्स आवर विल पावर एंड बाय द टाइम वी आर डन विथ योर शॉपिंग एंड वी आर एट द कैश काउंटर, आवर ब्रेन हैज नाउ एग्जॉस्टेड इट्स कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस. और उसी दौरान उसका फायदा लेते हैं. डिसीजन फटीक का जो पॉइंट आता है उसका फायदा लेके वहां पे वो कुछ शुगरी प्रोडक्ट्स रखते हैं कैश काउंटर के पास, बिकॉज नाउ वी नीड सम डोपामाइन ब्रेन के लिए, एंड वी गिव इन टू द प्रेशर और कुछ भी विदाउट रैशनैलिटी इरैशनल डिसीजन ले लेते हैं और वो चॉकलेट या जो भी सामने दिखता है हम उठा लेते हैं. So see how they are playing and manipulating with our psyche. Yeah? And then we try to justify when we go back home. हम बोलते कि नहीं नहीं चॉकलेट तो लेना था, वो पहले से ही प्लान था. हाँ ठीक है ना, शॉपिंग लिस्ट में नहीं था पर वो भूल गया था मैं लिखना. So we try to justify because we don't like to say that I got emotional that time. So we try to justify them logically. या कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से कुछ कोई अच्छा टी शर्ट या ड्रेस दिखता है, कोई प्लान नहीं है शॉपिंग का, और हम जाके वो इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं विदाउट एनी प्लानिंग. बस अच्छा लगा और ले लिया. उसके हमने कीमत नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, पसंद आया इसलिए लव एट फर्स्ट साइट हो गया और हमने ले लिया. और फिर घर जाके हम जस्टिफाई करते घर वालों को, नहीं नहीं ये कलर का टी शर्ट मेरे पास था नहीं, मेरे को पहले से ही प्लान था इसलिए मैंने लिया. सो वी नेवर एक्सेप्ट that we have taken the decision emotionally. We try to justify them logically. Yeah, we often do that, Shrikant, right? क्योंकि शर्म आती है ना बोलने को कि अरे हाँ मैं तो हावी हो गया उनके मार्केटिंग गिमिक्स में. आई फेल प्रे टू देयर मार्केटिंग टैक्टिक्स. ये तो हम बोलेंगे नहीं, अपना ईगो बीच में आता है ना. राइट. So this was interesting thing. I repeat, we take decisions emotionally and try to justify them logically. All right. फर्ज करो कि एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर नया स्टार्टअप है गारमेंट में, और आप उसके मेंटर हो या बोर्ड मेंबर हो, और वो आइडिया ऐसा है कि आपको एक पैंट मैन्युफैक्चर करनी है. नए पैंट है वो जो बहुत मोटी है, उसका कपड़ा बहुत मोटा है, धोने में बहुत दिक्कत है, उसको वो सूखता नहीं है जल्दी, और जो सोसाइटी के जो लोअर गरीब लोग हैं ना वो कपड़ा यूज करते हैं या वो पैंट पहनते हैं. तो क्या द क्रीम क्राउड, द इलीट क्राउड, द फैशन इंडस्ट्री विल बाय दैट पैंट? डू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? एक ऐसा कपड़ा जो गरीब लोग पहनते हैं, कभी कभी वो फटा हुआ रहता है, वो सूखने को टाइम लगता है, वो धोने का बहुत मुश्किल है, वो ऐसा वो गोनी गोनी जैसा उसका कपड़ा है. विल इट बिकम अ फैशन आइकन? आप बोलोगे कि व्हाट अ नॉनसेंस थिंग. नहीं, इट इज नॉट, इट वोंट बी कंफर्टेबल टू द स्किन, वो मोटा है, इंडिया जैसे हॉट कंट्री में वो नहीं चलेगा. यस, जीन्स. जीन्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल of what the author is trying to say, the power of ideas that don't make sense. Jeans
कैसे हिट हुआ, क्यों हिट हुआ, अभी तक वो मिस्ट्री है। अभी तक वो मिस्ट्री है कि क्यों हम जीन्स के पैंट्स क्यों पहनते हैं। फटे हुए जीन्स वो एक्चुअली फटे हुए जीन्स थे, मतलब गरीब लोगों के वो यूज कर करके फट जाते थे। और वहां से वो आइडिया आया किसी फैशन डिजाइनर के, हम फटे हुए जीन्स प्रमोट करें। अगेन, चेंज इन परसेप्शन इज वर्थ 80 IQ पॉइंट्स, और ये वाला आर कनेक्टेड। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। अगेन वी आर इन अ बोर्ड रूम, और एक सॉफ्ट ड्रिंक, नया सॉफ्ट ड्रिंक लेके आना है टू compete with these top guys, कोका कोलाज एंड पेप्सीज। ओके, तो आप टिपिकली क्या आइडियाज लेके आओगे? हाँ, हमको एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाना है, और इनका जो मार्केट है, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, इनको हमको compete करना है, उनको हराना है। तो आप क्या क्या आइडियाज लेके आओगे? कैसा चाहिए वो सॉफ्ट ड्रिंक? शायद आप बोलोगे इट शुड बी चीपर देन कोक, इट शुड बी टेस्टियर देन कोक, it should come in larger quantities than Coke and Pepsi. The most rational answers, right? आप ऐसे आंसर्स दोगे? एक ऐसा एरिएटेड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जिन्होंने एग्जैक्टली उसका उल्टा करना सोचा। जो कोक और पेप्सी करते हैं उसका उल्टा करते। तो दे केम आउट विद अ ड्रिंक which tastes disgusting, which is 3 times more expensive than Pepsi and Coke, and comes in smaller quantity. टिन्स में आता है, बोतल में नहीं आता है। You know what I'm talking about? Any guesses? I say the drink is 3 times expensive than Coke, comes in smaller quantities, and it tastes disgusting. Red Bull. Yes, Pratik? Red Bull. See the power of the contrarian. Red Bull ने एक ऐसा मार्केट पकड़ा है जो पेप्सी और कोका कोला ने सोचा ही नहीं। एनर्जी ड्रिंक, या मैं खुद, आई एम अ कस्टमर ऑफ रेड बुल। अगर मुझे नाइट ड्राइविंग करनी है और मुझे पता है कि मेरी नींद ठीक से हुई नहीं है, आई एम टेकिंग अ रिस्क, पर मुझे ड्राइव करना ही है, आई हैव वन रेड बुल का टिन इन माय कार, एंड मुझे इतनी एनर्जी मिलती है कि मुझे मेरी नींद उड़ जाती है। ये उसको आई डोंट एंजॉय इट्स टेस्ट। स्पोर्ट्स पीपल यूज इट बिफोर परफॉर्मेंस। So see the power of this idea, and going against the crowd, which takes a lot of courage. फिर आपको पता है ये उसने न्यूज बेस्ड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का भी बारे में ये दिया है कि हम सबको लगता है कि अरे अच्छा, वो यूक्रेन में वापस बॉम्ब डाला क्या रशिया ने, अच्छा इसलिए आज मार्केट 500 पॉइंट्स डाउन है, राइट? हमको ऐसा लगता है ना, ओ वहां पे वो ग्लोबल वार्मिंग का इशू वापस आ गया ऊपर, इसलिए कल सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरा क्या, राइट? या फिर ऑयल में कुछ लफड़ा हो गया, जियो पॉलिटिक्स का लफड़ा हो गया, इसलिए सेंसेक्स नीचे था। बट यू नो व्हाट, इट्स एक्चुअली द अदर वे राउंड, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। ये जो मीडिया वाले हैं, CNBC, NDTV, प्रॉफिट, वो क्या करते हैं कि आज अगर मार्केट गिरा नहीं, वो फ्लैट है, महज 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे है, लेकिन आज रशिया ने यूक्रेन पे बॉम्ब डाला, तो दे विल नॉट हाईलाइट दिस न्यूज, बिकॉज हाउ कैन दे जस्टिफाई कि मार्केट तो 30 पॉइंट नीचे है। दे विल नॉट हाईलाइट दिस नेगेटिव न्यूज। कहने का मतलब ये है कि इफ द मार्केट इज डाउन, दे विल हंट फॉर ऑल द नेगेटिव न्यूज इन द वर्ल्ड एंड गिव इट टू यू टू जस्टिफाई, देखो इसकी वजह से मार्केट गिरा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ओके, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप मार्केट क्यों नीचे गया या क्यों ऊपर गया, ये आपको लिए मायने नहीं रखना चाहिए, बस ऊपर गया नीचे गया, बिकॉज यू वांट टू मेक मनी, यू आर नॉट, you don't want to prove loyalty to the markets, right? So this is very important point that the author says, that if the market is up, these media people will hunt for positive news. अच्छा, मोदी ने अभी ये नया फंड क्रिएट किया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए आज निफ्टी ऊपर है। वही अगर आज निफ्टी नीचे रहता 100 पॉइंट्स, दे विल हंट फॉर, अच्छा वो डोनाल्ड ट्रम्प ने वो स्टेटमेंट किया ना कल, इसलिए मार्केट नीचे है। Yeah, this is very funny. Might sound counterintuitive to most of us, but this is what the author is saying. Uh, One very funny thing is that about mathematics, sometimes mathematics is not applicable in our real world.
अमेजोन का उसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है. अमेजोन कैन सेल one item to 47 people, but it can't sell 47 items to one person. आपने कभी 40 चीजें try to buy 40 items at a time on Amazon and you'll go mad. You will go mad क्योंकि 40 अलग अलग वेंडर्स, 40 अलग अलग डेट्स, 40 अलग अलग डिलीवरी टाइम्स आएंगे and you'll go mad. So मैथमेटिक्स में जो होता है 1 into 47 और 47 into 1 सेम ही होता है मैथमेटिक्स में, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. Amazon can sell 47 items to one person, but it can't sell. Amazon can sell one item to 47 people, but can't sell 47 items to one person. Same goes with a funny statement which says that you can't have a baby in 1 month by making 9 women pregnant. So mathematics में 1 into 9 is equal to 9 into 1. But यहाँ पे ऐसा नहीं है, right? अगर बच्चा चाहिए तो 9 महीने रुकना ही पड़ेगा. You can't have a baby in 1 month by making 9 women pregnant. एक वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया बुक पे लिखा था कि एक बंदे ने बुक लिखा हाउ टू मेक योर वाइफ हैप्पी, एंड टाइटल था बुक का हाउ टू मेक योर वाइफ हैप्पी. एंड इफ यू गो एक्चुअली अमेजोन पे वो बुक है, एंड इफ यू बाय दैट बुक, वो 300 पेजेस की बुक है, और अगर आप बुक को खोलोगे तो पूरे 300 के 300 पेजेस ब्लैंक है. एंड क्रेजी, लाइक ऐसा बंदा कैसे कर सकता है? उसने कुछ तो खर्चा किया होगा ये आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए, अमेजोन पे जीएसटी लिया रहेगा, वो सब करके ही वेंट एट दैट एंड दैट आइडिया इज वर्किंग. पीपल आर बाइंग दैट बुक एज अ प्रैंक. वो प्रैंक के लिए करते हैं, या फिर दोस्त लोग मस्ती करने के लिए जो वेडिंग कपल है उनको वो बुक गिफ्ट करते हैं कि भाई अभी तेरी तो लग गई ये बुक पढ़, और अंदर कुछ है ही नहीं, सब ब्लैंक, और सब लोग हंसते. सो ही फाउंड दैट different category of people. What is the name of the book? How to make your wife happy. ऐसा ही कुछ नाम है. आप खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये आइडिया के तौर पे बोल रहा हूँ कि द क्रेजिएस्ट आइडियाज कैन ऑल्सो वर्क. तो किसने सोचा होगा कि एक ब्लैंक बुक, ब्लैंक का कुछ भी लिखा नहीं है उसके अंदर, बट इट बिकेम अ प्रैंक एंड पीपल आर बाइंग इट. और उसके बाद द बेस्ट पार्ट, ही केम आउट विद सेकंड एडिशन of the same book with 400 blank pages. And that is also working. So it's a crazy world. And तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि लोगों के दिमाग को अटैक करो, उनको दिखाओ कि हमारा प्रोडक्ट कितना बेटर है, कि ज्यादा फीचर्स है, डिस्काउंट ऑफर्स, इन सब पे जरूरी नहीं कि जाना चाहिए. वी आर ऑल इरैशनल क्रीचर्स, वी आर इमोशनल क्रीचर्स. हम सब डिसीजन इमोशनली लेते हैं और दिखाते हैं कि हम बहुत रैशनल इंटेलेक्चुअल हैं. तो इंसान है ना, सबसे बड़ा दिमाग हमको है in the animal kingdom. So we can't say that there was no logic in buying. So I think this was the best part of the book. And yeah, कोई पूछ रहा था ये बुक का नाम, तो you can buy it, but आपको कुछ मिलेगा नहीं उसमें, बस blank pages मिलेंगे. Anybody who would like to share such कोई ऐसा स्टार्टअप आइडिया है जो शुरू में एकदम बकवास लगा बट इट इज वर्किंग वेल? I have more such ideas from the book, but I would like to hear something from you guys. Now you got to know the topic well. It's a crazy world, and I'm sharing all the stupidest ideas, which really don't make sense, but they work well. Yeah. Or you have tried something crazy and it really worked for you. Anybody can share something? You can unmute and speak. One I can think about is ये जो disease है, there's a mental disorder called dyslexia. तारे जमीन पर मूवी आने से पहले हमको डिसलेक्सिया पता भी नहीं था क्या है, राइट? और वेरी नैरो टॉपिक आमिर खान ने उठाया और उससे पूरी पिक्चर बनी एंड इट वाज हिट. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रेरियन थियरी, कि हमको लगता है कि नहीं, मूवी में सब कुछ होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, आइटम सॉन्ग होना चाहिए. He defied all these assumptions. And yet Tare Zameen Par was a hit, right? So this is what we want to learn. Yeah. बुकलेट का भी ऐसा ही हुआ था.
जब मैंने बुकलेट का आइडिया मेरे दोस्तों को, मेरे कजिन्स को बताया था, ऑलमोस्ट 10 में से 10 लोग बोले कि मत कर, बकवास आइडिया है, कौन तेरे ये प्रवचन सुनेगा, कौन यंगस्टर्स तेरा ये ऑडियो समरी सुनेगा, हाँ समरीज बनाएगा तो ऑथर तेरे को मारेंगे, उनके पेट पे लात है, ये सब सोचा। बट सी हुआ उल्टा। ऑथर्स हमको, मेरे को बोल रहे कि मेरे ये भी बुक कर, मेरा ये भी बुक कर, मेरी समझ के, ताकि आई एम प्रमोटिंग द देयर बुक। सो सी इट एग्जैक्टली उल्टा हो गया। अगर मैंने सोचा होता कि नहीं मेरे दोस्त लोग सही बोल रहे हैं, इस आइडिया इज नॉट गोइंग टू वर्क, तो लोग जो बोलते हैं और करते हैं इसमें फर्क है। और एक बंदा है, मुझे अभी भी याद है, उसने क्या किया था, सो एक मेरा स्कूल का ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैंने उस ग्रुप में मेरा आइडिया शेयर किया था कि ऐसा ऐसा है ना, मुझे आइडिया आया है कि रिच डैड पुअर डैड, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ऐसे बुक्स की समरी बनाऊंगा और वो व्हाट्सएप पे शेयर करना शुरू करूंगा। क्या लगता है आपको, ये मैं करूँ क्या? आइडिया अच्छी लगी? एक लड़का ने इतना गंदा सा कमेंट किया और बोला कि ये अमृत चल छोड़, अभी वो महाराष्ट्र ने पोर्नोग्राफी का बैन उठा दिया है, तो उस वक्त पोर्नोग्राफी पे बैन लगाया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, थोड़े दिन के बाद उसको बैन निकाल दिया। तो उसने ऐसे ही मजाक में बोला कि तेरा कौन ये देख, तूने कहा अभी पोर्नोग्राफी का बैन निकल गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, तो तेरा ये कोई सुनेगा नहीं समरी में बनी। एंड आई लिटरली क्राइड, और फिर एवरीबडी फॉलोड दैट, नो मेड फन ऑफ मी कि हाँ हाँ बराबर बोल रहा है वो। एंड आई क्राइड दैट डे कि इन बुक्स की बात और ये पोर्नोग्राफी बोल रहा है, मुझे इतना खराब लगा। इट वॉज अ डायरेक्ट अटैक ऑन माई सेल्फ एस्टीम। फिर मैंने सोचा कि मे बी वो क्राउड मेंटालिटी था कि एक ने बोला तो सब ने फॉलो किया उसको, ना क्राउड मेंटालिटी। तो मैंने क्या किया, मैं ग्रुप में नहीं लिखता हूँ, ये सीरियस चीजें कभी ग्रुप में नहीं होती। सीरियस में, ग्रुप में हमेशा मजा मस्ती होता है। देखो, जब दो लोग बातें करते हैं ना तो वो चर्चा होती, जब तीन लोग मिलते हैं तो चर्चा नहीं होता, गप्पे लड़ते हैं। हैव यू ऑब्जर्व दिस? जब तीन दोस्त मिलते हैं ना तो टांग खिंचाई, मस्ती, जोक्स रहते हैं, मतलब दो दोस्त मिलते हैं तो नो इट्स अ इंटेलिजेंट डिस्कशन। ये ऑब्जर्व, बहुत कॉमन चीज है ये। और तो मैंने क्या किया, सबको इंडिविजुअली मैसेज किया, सेम मैसेज में, कि मैंने मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, चाणक्य नीति, ऐसे बुक्स जो हमारे स्कूल और कॉलेज सिलेबस पे नहीं होते हैं, उसकी समरी बनाऊंगा और वो व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, टेक्स्ट और ऑडियो में। क्या क्या लगता है आपको? एवरीबॉडी सेड फैंटास्टिक आइडिया। मतलब देखो, आज सेम मैसेज मैंने ग्रुप में डाला तो हंसी मजाक हुई, जब इंडिविजुअली भेजा तो मैंने क्या सीखा कि कोई सीरियस चीजें होते हैं वो 1 to 1 होना चाहिए, वो ग्रुप में नहीं होना चाहिए, स्पेशली दोस्तों के ग्रुप में। तो वो उसका सीरियसनेस चला जाता है, ग्रुप में हमेशा कैजुअल टॉक्स होते हैं। या इनफैक्ट जो लड़का जिसने मुझे वो पोर्नोग्राफी का कमेंट किया था ना, वो अभी 6 महीने पहले उसने मुझे, वो ही वर्क्स इन मर्सिडीज इन लंदन यूके, उसने मुझे कॉल करके बोला कि अरे आई वांट टू इन्वेस्ट इन बुकलेट, आई वांट टू बिकम अ मेजर इन्वेस्टर इन योर बुक, इन बुकलेट। बोला अरे साले, तुझे याद है तूने क्या बोला था 6 साल पहले? तो मैंने बताया तूने ऐसा बोला था ग्रुप पे। तो बोला मुझे कि अच्छा मैंने ऐसा बोला था, मुझे तो याद नहीं है। तो तब मुझे एक और लेसन मैंने सीखा कि his intention was not to pull my leg, that I should not succeed. It was just a casual comment. He had no idea कि उसके consequences कितने सीरियस हो सकते हैं। उसने बस मजाक में बोला बिकॉज इट वॉज अ ग्रुप। ग्रुप में हमेशा हंसी मजाक होती है। तो ऑफकोर्स मैंने उसको, आई पार्डन हिम, मैंने उसको माफ कर दिया कि अगर मैं तुझे उस वक्त सीरियसली लेता तो आज बुकलेट नहीं होता, मैं बुकलेट गाय नहीं होता, कहीं पे किसी बैग पे काम करता रहता 9 to 5। वेल एनीवे, उससे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं ली। जरूरत नहीं पड़ी मुझे, बिकॉज इट्स अ सोशल स्टार्टअप। या आई एम वेटिंग फॉर समबडी टू कम आउट विद सम इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ओके, अगर कुछ है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और एल्स आई विल कंटिन्यू। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया इज अबाउट, जो ट्रेडिशनली चल रहा है उसमें से नंबर ऑफ ऑफरिंग्स को निकालोगे और कम चीजें ऑफर करोगे तो यू बिकम डिफरेंट इन द मार्केट। आई गिव एन एग्जांपल। स्विगी, आप स्विगी को एक कुरियर वाला के नजर से देखते हो क्या? इज स्विगी अ कुरियर वाला? नो, इट इज अ फूड डिलीवरी ऐप। बट डोंट यू थिंक स्विगी इज डूइंग नथिंग डिफरेंट देन अ कुरियर गाय?
but it has cut down the items that he delivers. For example, a courier wala transports everything, a document, a perishable item, non-perishable item, gift, सब कुछ करता है. स्विगी ने क्या किया, वो नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिलीवरी को कट करके सिर्फ फूड पे रखा, फोकस किया, एंड सडनली ही केम आउट फ्रॉम द ह्यूज मार्केट ऑफ courier and became a food delivery app. It's a very, very strong approach. If you want to get rid of the competition, cut down the number of offerings that the traditional players are giving, और सिर्फ एक पे फोकस करो. I have so many examples. I have so many examples. मेरे एक डेंटिस्ट फ्रेंड है जिसके पास मैं जाता था, और एक दिन रोते रोते घर पे आ गई कि अमृत, माय प्रैक्टिस नॉट डूइंग वेल, सब वेस्ट गया, मैंने इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, पिताजी ने लोन लेके मेरे लिए मेरी पढ़ाई करवाई, और अब मेरा क्लिनिक चल ही नहीं रहा है. इट्स नॉट दैट आई एम नॉट अ गुड डेंटिस्ट. तो मैंने उसको पूछा कि हु आर यू. शी सेड आई एम अ डेंटिस्ट. आई सेड दैट्स द प्रॉब्लम. गली गली में डेंटिस्ट है, तो व्हाई विल आई चूज यू ओवर अनदर डेंटिस्ट जो नेक्स्ट गली के नुक्कड़ पे दूसरा क्लिनिक है. एंड शी सेड व्हाट डू यू मीन. आई सेड कम लेट्स डिस्कस. और वी स्टडीड कि एक डेंटिस्ट टिपिकली क्या क्या ऑफर करते, रूट कैनाल, क्लीनिंग, ये सब. एंड वी केम आउट विद अ न्यू न्यू कैटेगरी. हालांकि ये करना है उसको डेंटिस्ट का काम, बट उसके नंबर ऑफ ऑफरिंग्स को हमने कट करके एक ही ऑफरिंग रखा. कि बहुत लोग आजकल स्माइल नहीं करते सेल्फी लेते टाइम या वीडियो शूटिंग के वक्त, स्माइल नहीं करते बिकॉज उनके आगे के दांत बहुत आड़े टेढ़े होते हैं, उनको शर्म आती है स्माइल करने को. एंड डेंटिस्ट की जगह हमने उसका नाम दिया, मेरे दोस्त को, स्माइल डिजाइनर. A smile designer will only work on this front teeth. जो स्माइल करते वक्त जो आगे के दांत दिखते हैं ना, उसी पे हम काम करेंगे, उसको हम चकाचक करके तुम्हारी स्माइल बेहतर कर देंगे. एंड यू नो व्हाट हैपेंड, धीरे 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 उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई. नाउ शी इज नॉट अ नेक्स्ट गली डेंटिस्ट, बट शी इज अ स्माइल डिजाइनर. और उस हिसाब से प्रमोशन किए हमने. एंड नाउ दुनिया में जिसकी भी स्माइल खराब है, वो किसके बारे में सोचेगा, मेरी जो दोस्त है, बट शी इज नॉट कॉल्ड एज अ डेंटिस्ट, शी इज कॉल्ड एज अ स्माइल डिजाइनर. काम कर वो रही है. ऑफ कोर्स यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, शुरू में शी हैड टू शो बी बोल्ड एंड शो दैट मच ऑफ ऑडेसिटी टू से नो टू द क्लाइंट्स, आई मीन पेशेंट्स हु कम फॉर रूट कैनाल. जो पीछे के दांत है, जो जॉ लाइन के दांत है, वो जो सड़ गए तो उसका आरसी करना पड़ता है. आई सेड यू हैव टू से नो टू सच काइंड ऑफ पेशेंट्स, sacrifice your immediate gains in order to have a larger long-term benefit. It was not easy. It was not easy for her. But now she's a famous smile designer. But हमको पता है कि वो एक dentist ही है. So you know how identity plays a vital role. Even I am very conscious. Like I have a great penchant for fitness. Okay, I'm learning guitar, but I'll never make it part of my social profile because that will dilute my identity in your head. Right now, my identity in your mind is so clear कि ये बंदा इतना बुक्स के लिए पागल है कि वो he drinks books, he sleeps with books, he reads books, he सब कुछ books. Why? Because I have the audacity to say 1,000 no's to other attractive things in my life. मुझे भी टेररिज्म पे काम करना है, मुझे भी करप्शन पे काम करना है, मुझे भी क्लाइमेट चेंज पे आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, बट आई विल नॉट डू दैट बिकॉज देन यू विल लूज माई आइडेंटिटी कि ये तो कहीं करता क्या है, राइट. सो द बेस्ट वे टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट इन वन फील्ड is not to create any impact in other field. Got it? If you are a yoga instructor, don't say that I am also a great cook. Don't talk about recipes on your YouTube channel, but focus only on yoga. Only then, because people find it very difficult to identify you with more than one thing. If we have identified Kapil Sharma as the best stand-up comedian of India, we will reject him as a hero in a movie, and that's what happened with him. Right? There are exceptions like Amitabh Bachchan. Okay, he's an exception. We accepted him as an actor.
we accepted him as an anchor, but no, people can't identify you with more than one thing. Yeah, Sachin, we identify only with one thing. All right. And so, come what may, I will never allow my identity to dilute. Okay. Even if I'm doing many things offline without your notice. Uh, Another example can be urban clap was a very good example. If you observe the journey of urban clap 5 years ago, urban clap was offering so many services: house cleaning, deep cleaning, maid supply, बहुत कुछ करते, पेस्टिसाइड्स और ये सॉरी क्या बोलते, पेस्ट कंट्रोल, प्लम्बिंग, सब सर्विसेज अंडर वन रूफ ऐसा देखते. इट वाज अ बिग फ्लॉप. Now if you see, I think they have hired Ayushman Khurrana as that brand ambassador. They're focusing only on air condition maintenance. They cut down all the other offerings and are focusing only on one thing. Air condition maintenance is such a tiny part of their business, but उनके ads बस उसी पे focus कर रहे हैं, and they are doing much better than the old days. So कम करके आपको अगर ज्यादा कस्टमर मिल रहे हैं तो क्यों ना करें? I'll give you a simple example. You want to buy mangoes. It's a month of April. गर्मी चल रही है. You are determined to buy mangoes. आपके गली के नुक्कड़ पे there are two fruit sellers. One fruit seller is selling only mangoes, all types of mangoes. हापूस, पायरी, लंगड़ा, वड़ा, जो भी है. And next to him एक और ठेले वाला है. He is selling mangoes, but along with mangoes, he is selling सीताफल, banana, pineapple, ऑरेंज, चीकू. आप किसके पास जाओगे? क्विकली किसके पास जाओगे? यू वांट टू बाय मैंगोज. देयर आर टू ठेले वालास, वन सेलिंग ओनली मैंगोज, अदर गाय selling mangoes, banana and many other fruits. The first one, Nitish, the first one, mango wala, mango. Why? Please unmute and tell me why. What is the logic? Please unmute and I want to hear. It's a one-side talk. I don't want this. Nikhil, you're talking, but I can't hear you. Nikhil, please unmute yourself. Nikhil, Gime. Nikhil, unmute yourself, please. Nikhil ji, you can click on unmute option. It's available for you. Shop has special identity. अभी तो मैंने बताया इसलिए. Because I came to buy mango in my mind. Nitish, you agree, but then the other guy is also selling mango, no? He can have a great stock where I can, yeah, now you're talking. The Vivo guy, I don't know what's his name. Makes sense? When a guy is selling only mangoes, we invariably assume that he must be great at selling mangoes. Whereas ऐसा कोई logic नहीं है. The quality of mango that the specialized mango seller is selling and the quality of mango that the other guy is selling might be the same. But we will assume that the first guy must be selling better mangoes. अब इसका logic क्या है मुझे भी नहीं पता. Right? The second thing I think is जब सिर्फ वो मैंगोज बेच रहा है तो हमको डिसीजन मेकिंग नहीं करना है. Whereas दूसरे वाले पे हमको डिसीजन करवाना है कितने सारे फ्रूट्स हैं. Right? So this is a very good example. If you want to offer, cut down and offer only one thing. In fact, मुझे अभी लगता है कि it is little too late for me कि मैं भी अभी बहुत अलग अलग टाइप्स के बुक्स कर रहा हूँ ना बुकलेट पे. शायद 6 साल पहले अगर मुझे ये आइडिया पता रहता तो मैं कोई एक ही टाइप के बुक्स करता. एक कोई टॉपिक लेके बस उसी में घुसता. अभी मैं सब कर रहा हूँ, फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफीज, प्रोक्रास्टिनेशन, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, सब बुक्स पे कर रहा हूँ. मे बी और स्पेशलाइजेशन का स्कोप होता था. So nowadays it is not just, forget about diversification, not just specialization, it's a world of super specialization. अभी आप बोलोगे अच्छा फिर रिलायंस जैसी कंपनी कैसे तरक्की कर रही है? वो तो सब कुछ कर रही है, टाटा तो सब कुछ कर रहे हैं, वो तो चड्डी बनियान भी बेच रहे हैं, वो साबुन भी बेच रहे हैं, वो फल फ्रूट भी बेच रहे हैं, वो कैसे चल रहा है? सी प्रॉब्लम इज उनका they are in this corporate world 10-20 years, since 10-20 years. उस वक्त it was everything under one roof, work well. कि चलो टाटा के पास गए तो सब कुछ मिलेगा, रिलायंस में गए तो सब कुछ मिलेगा, right? Today
when you can buy and access a specialized guy who is just a click away, just a click away, don't you think people will go only to the specialized guy and not the generalist? Yes or no? अगर मुझे मेरे स्माइल के दांत खराब है और मुझे वो ठीक करने हैं, तो मुझे जब गूगल करूंगा तो मैं स्माइल डिजाइनर के पास जाऊंगा या जनरल डेंटिस्ट के पास जाऊंगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आज के जमाने में जहां पे देयर इज हाइपर कनेक्टिविटी बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सुपर स्पेशलाइजेशन विल वर्क, नॉट इन द इमीडिएट रन, इन द लॉन्ग रन. वो मैंगो वाला, स्पेशल मैंगो वाला है ना, शुरू के 1-2 साल वो देखेगा, अरे मेरे पास तो भीड़ ही नहीं है, भीड़ तो बाजू वाले के पास है जो सब फ्रूट्स बेच रहा है, और उसको लगेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ क्या सिर्फ मैंगोज बेच के. पर इन द लॉन्ग रन हमारे मन में उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी, अरे ये आम बेचता है सिर्फ, जब देखो आम बेचता रहता है, आम बेचता रहता है, तो जब भी आम का ख्याल आएगा हम उसके पास जाएंगे, हम वो जनरलिस्ट के पास नहीं जाएंगे. और वही मैंने किया है पिछले 6 साल में. दुनिया में जो भी बुक्स के बारे में सोचेगा, दे शुड थिंक अबाउट बुकलेट गाय, एंड अमृत's नेम शुड पॉप अप. फॉर दैट I have to I don't have to do many other things. So last time जो हमने डिस्कस किया था, what you don't do is more important than what you do. Do you remember we had discussed last time कि आप क्या नहीं करते is more important than आप क्या करते. All right. Power of opposite. Again, जो मैंने रेड बुल का एग्जांपल दिया था ना, कि उन्होंने एग्जैक्टली अपोजिट किया. कोक और पेप्सी ने जो किया उसका एग्जैक्टली उल्टा किया, एंड रेड बुल इज अ बिग हिट आइडिया. अनदर पावर ऑफ अपोजिट जब हमको समझा, तो आई ट्राइड विथ माय ओन फ्रेंड, कि माय फ्रेंड इज अ जिम ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ फिजिकल ट्रेनर, एंड वी वर थिंकिंग ऑफ एन आइडिया टू सेट अप ए जिम. तो आपने क्या किया कि एक जिम के लिए क्या क्या चीजें रहती, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ हैविंग अ जिम. एसी चाहिए, फैंसी इक्विपमेंट्स चाहिए, न शूज पहनने चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. वी चैलेंज ऑल दीज assumptions. ये भी एक क्रिएटिव आइडियाज का एक एक्सरसाइज है, दैट यू चैलेंज दोस assumptions एंड रिमूव इट एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. हमने सोचा ए जिम विदाउट इक्विपमेंट्स, एंड वी केम आउट विद एन आइडिया ऑफ फ्रूगल जिम, जहां पे बस कुछ सिंपल चीज, या बॉडी वेट को यूज करके ही एक्सरसाइज किया कर सकते हैं क्या. हमारा बॉडी खुद का एक वेट है, तो हमको अलग वेट उठाने की जरूरत क्या है. एंड वी केम आउट विद एन अमेजिंग आइडिया कॉल्ड रॉ जिम. एंड देयर आर नो इक्विपमेंट्स, नो एसी. वी केम आउट विद एन ओपन जिम. जिम टेरेस पे है, जहाँ पे छत ही नहीं है, एंड पीपल आर लविंग इट. दे आर कमिंग फॉर द एक्सपीरियंस. एक्सरसाइज के लिए तो आ ही रहे, बट दे आर ऑल्सो कमिंग फॉर एन एक्सपीरियंस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल जिम्स, जहाँ पे चकाचौंध है, क्लीनलीनेस है, एसी है. वो अभी लोग ऊब चुके हैं उसके लिए, और रिजल्ट्स आते नहीं, वो अलग बात है, पर दे आर कमिंग हियर टू द रॉ जिम because it is very frugal, it is very raw, there are no fancy equipments, etc etc. दूसरा एक मेरा दोस्त है, so he is into meditation, yoga. His name is Manish Panchal. I love the way he executed his idea. He is a yoga instructor and meditator. वो मेडिटेशन सिखाता है, और वो ना हम जैसे ट्रेडिशनल स्कूल में कभी गया नहीं. ही वेंट इनटू गुरुकुल सिस्टम. तो उसने कभी बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं. वो गुरुकुल में जो सिलेबस होता है वो उसने सीखा, एंड देन ही इज अ ग्रेट योगी एंड मेडिटेटर. और उसने पता है क्या किया, he started observing, he started approaching all the high-end elite beauty parlors in the most posh areas of Mumbai, like Kulaba, Nariman Point, Marine Lines, Bandra. वो जहाँ पे औरतें जब एंटर करते हैं ना ब्यूटी पार्लर में, तो कम से कम 30,000 का खर्चा करके आप बाहर आते हैं. करते क्या है मुझे नहीं मालूम अंदर, पर मीनिंग दैट्स द लेवल ऑफ एक्सपेंसेस दे बेयर in beauty parlor. So beauty parlor के सामने आपको Mercedes will be the cheapest car. You will see only Ferraris and Porsche. And he found an amazing idea in this, and with zero investment. And I love him for this idea. He observed कि वो जो औरतों पे वो सब लगाते हैं मुंह पे, and then वो काकड़ी लगा के they have to spend almost 30 minutes under the fan.
हवा के लिए वो सूखना पड़ता है, पैक डिटेल्स मुझे पता नहीं है। तो वो 30 मिनट्स तो वेस्ट हो रहे हैं। ही अप्रोच दिस ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी सलॉन्स, कि वो 30 मिनट्स मुझे दो, एक छोटा सा कमरा दो, आई विल टीच देम मेडिटेशन फॉर फ्री ड्यूरिंग दोस 30 मिनट्स। ब्यूटी पार्लर के ओनर सोचा व्हाट्स द डाउन साइड, जगह है, टाइम है, और वो कहते बोले कि हाँ ठीक है 30 मिनट क्या करेंगे टाइम पास। एंड दिस इज हाउ ही स्टार्टेड मेकिंग कनेक्शंस विद द मोस्ट elite people of Mumbai, has an amazing network of the richest people in Mumbai, and now he's called as a Bollywood yogi something, where he's very famous in Bollywood and teaching yoga to all the celebrities. So amazing idea, and I wish I can take him one day in one of our sessions, and he will explain it in detail at how he, और उसको अभी रॉयल एनफील्ड गिफ्ट मिलती है दोस्तों से, दोस्त मतलब क्लाइंट से, डूइंग वेरी वेल वेरी वेल। अभी देखो क्या खर्चा है इसमें, एक तो उसने खुद का जगह भी नहीं लिया है, कुछ खर्चा भी नहीं किया, ही जस्ट नो एक आइडिया एग्जीक्यूट किया अच्छे से। अनदर फ्रेंड आई हैव इन पुणे, I call her as the patent expert. She has some 72 patents in her name and she is just 25. उसने देखा कि the silliest pain point, स्टेपलर रहता है, स्टेपलर के पिन जब खत्म होते हैं तो एक छोटा सा इच आता है ना दिमाग में, अरे यार इसको अभी खत्म होना था, and then we start hunting for the pins. So she came out with an idea. The last 3 pins of the set of the pins will have red color. So that जब आप स्टेपल कर रहे हो तो आपको रेड दिखेगा, तो आपको वार्निंग मिला कि अभी खत्म होने को आया है, एंड यू बी प्रिपेयर्ड टू रिप्लेस इट विद न्यू सेट ऑफ पिन्स, एंड शी गॉट इट पेटेंटेड एंड शी इज गेटिंग रॉयल्टी इन दैट। और अभी इससे और सिंपल आइडिया क्या हो सकता है, राइट? अनदर डेल्टा 4 करके एक कंसेप्ट है, कुणाल शाह, द ओनर ऑफ क्रेड एंड एक्स ओनर ऑफ फ्री चार्ज, ही इज ऑल्सो माई फ्रेंड, बिग टाइम मिलियनेयर। क्रेड के एड्स आपने देखे होंगे आईपीएल में। So he also talks about the same idea that Rory Sutherland has propagated in this Delta 4. Delta 4 मतलब क्या कि your product is such that, or product or service, that people will never think of going back to the old behavior. For example, IRCTC का एक्सपीरियंस, आपको IRCTC पे टिकट बुक करने का एक्सपीरियंस कैसा है? इतना अच्छा नहीं है ना। द वेबसाइट इज, द डिजाइन इज नॉट ग्रेट, कभी चलता है वो कैप्चा, कभी चलता है नहीं चलता है, बट स्टिल once you book on IRCTC through train, you will never go back to the old behavior of standing in the queue and booking your through train ticket for Jalgaon and Delhi. Do you agree with this? IRCTC का एक्सपीरियंस लेने के बाद भले ही वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, आई नो द टेक इज नॉट सो ग्रेट, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, थकेला है, कभी कभी वो चलता नहीं है वेबसाइट, फिर भी we do online booking, we never went back to the old fashion of standing in the queue and buying the physical kagaj wala ticket. This is called the Delta 4 product, जहाँ पे the facilities so better, it is not just marginally better than the old behavior, it is way better, and so we don't even think of going back to the old behavior. Ola Uber is a very good example. It is so convenient that we have stopped standing on the streets and being at the mercy of the taxi driver for a cab. It's a Delta 4 product. But you must have bought t-shirts and dresses online like Myntra. But has that stopped you to go in a physical shop to buy a dress? No. You are still buying garments in offline shops, and sometimes you do shopping online. It is not a Delta 4 product. Delta 4 का समझे, डेल्टा मतलब change. The change is so huge that you don't even think of going back to the old behavior. I hope you are getting my point. I hope it is not too technical. Guys, just give me a thumbs up if अगर सब कुछ bouncer जा रहा है, नहीं जा रहा है. All right, yeah. Challenge the assumption की जो बात की थी. So I have a friend in Vashi. He wanted to come out of the restaurant. तो उसने लिस्ट बनाया कि एक रेस्टोरेंट
इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या assumptions है? You need waiters, you need fancy utensils, dishes, you need lighting, you need furniture, you need raw material, you need chef, cooks, ये सब लिस्ट किया. और फिर उसने डिस्कस किया कि वेटर्स शुड हैव अ गुड मेमोरी, कि कौन से टेबल पे किसका ऑर्डर है और वहां पे जाके देना है. अगर उसमें गड़बड़ हो गया, कस्टमर विल गेट पिस्ड ऑफ. उसने उसको निकाल दिया कि हाउ अबाउट वेटर्स विथ लॉस ऑफ मेमोरी. एंड ही हायर्ड ऑल द वेटर्स हु आर सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स, old patients of Alzheimer's. And suddenly it became such a hit idea. I think internet पे वो वीडियो दिख जाएगा आपको. People started going there to help those Alzheimer patients, and they were doing blunders. तो किसी का टेबल नंबर 1 का ऑर्डर टेबल नंबर 2 पे जा रहा है और फिर ओ सॉरी मुझे याद नहीं है, और फिर कस्टमर्स भी हंसे, इट्स ओके. एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट. नो, वंस आपको पता चलेगा, यू विल गो देयर फॉर द एक्सपीरियंस. फूड तो अच्छा होना ही चाहिए, दैट्स द अंडरलाइंग assumption. But by challenging one of the assumptions, you can come out with a completely different idea. And then you are not one of those restaurant owners now, right? Like another example I can give where, which is the best burger in the world? Most of you say McD, McDonald's, right? But not necessarily, right? You don't know which is the best burger in the world. You think that आपको पता है McD है, इसलिए you are saying McDonald's. Now, have you ever thought of going to McDonald's and ask for pav bhaji? No, right? Again, a very good example of cutting down the number of offerings on your plate and say that I only sell burgers. And hence, burger and McDonald's are synonymous. Because they said no to pav bhaji, dosa, dabeli, and whatnot. Are you getting my point? So what you don't do is more important than what you do, right? Whereas मेरे सामने जो सूरज होटल है, he is also selling burger in his hotel, but he is selling, along with it, he is selling pav bhaji, idli, dosa, everything. I will not think of Suraj Hotel when I want to eat burger. I'll always think of McDonald's when I want to eat burger. Yeah. Another concept is of placebo. Have you heard about placebo effect? There was a doctor called placebo, I guess. He did a very interesting experiment. तो उसके 10 पेशेंट्स थे विथ मोर और लेस सेम सिम्टम्स, सर्दी जुकाम सबको था, और उसको उसने 2 ग्रुप में बांट दिया. 5 पेशेंट्स को बुलाया और उसको इंडिविजुअली बोला कि ओके, आई हैव डायग्नोस्ड एग्जैक्टली व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये गोलियां है और आई गारंटी यू 5 दिन में आप ठीक हो जाओगे. ऑलराइट. सो ही शोड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि और वापस आने की जरूरत नहीं है, अगर जस्ट इन केस आओ, नहीं वरना नहीं आ चलेगा, आई एम वेरी श्योर यू विल गेट वेल सून. द सेकेंड ग्रुप पे उसने बोला कि आई एम नॉट श्योर कि ये डायग्नोसिस ठीक है कि नहीं, बट आई ट्राई टू गिव यू दीज पिल्स, इफ दे डोंट वर्क प्लीज कम बैक, आई विल रिप्लेस देम. ही शोड, he gave very wishy-washy answers. And you know what? Group 1 के लोग, पेशेंट्स के सर्दी जुकाम vanished in 2 days, whereas group 2 के जो 5 पेशेंट्स थे, they came back again with the same symptoms. वो ठीक नहीं हुए. This is not the end of the story. The real experiment is, जो फर्स्ट ग्रुप था उनको सिर्फ उसने वर्बली कॉन्फिडेंस दिया था, whereas the pills that he had given was just white powder. वो कोई दवाई नहीं थी. Just because the doctor said it confidently कि मैं आपका इलाज कर दूंगा, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे, they actually got well. Whereas सेकेंड ग्रुप को उसने एक्चुअली दवाई दी थी सर्दी जुकाम की, फिर भी ठीक नहीं हुए. This is called as placebo effect. And we fall prey to such placebo effect so many times. एलिवेटर में एक दरवाजा बंद करने का एक बटन रहता है. वो एक्चुअली बटन काम ही नहीं करता है, वो सिर्फ डिजाइन के लिए रखा है. आप देखो, हमको लगता है कि हमने दरवाजा बंद किया, और दरवाजा जब बंद होना है तभी बंद होता है. इट्स जस्ट एन इल्यूजन. दैट्स कॉल्ड एज प्लेसिबो इफेक्ट. बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि उसको जैसे फायदा हो रहा है, पर एक्चुअली वो सब मनगढ़ंत कहानियां होती है मन में. आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड
good number of ideas from this book. A very crazy idea. अगर आपको पढ़ना है, मेरी कॉपी लेना है, तो you are feel free to bid for this book. I think कुछ मैंने 500 रुपीज को ये बुक ली थी. मैंने सब मार्किंग भी किया है इस बुक में, जो बुक्स आइडियाज मुझे अच्छे लगे. वेरी डिफरेंट बुक. जरूरी नहीं कि आपको चैप्टर टू चैप्टर पढ़ना है इसको. कोई भी चैप्टर उठाओ और पढ़ो और मजा आएगा पढ़ने का. सब क्रेजी आइडियाज और एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स के लिए तो माशाल्लाह इट्स अ बाइबल. आपका दिमाग हिल जाएगा कि अरे ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ. पागलपन है पूरा इस बुक में. और इसके यूट्यूब वीडियोस भी है काफी, रॉरी सुदरलैंड के. प्लीज गो एंड वॉच हिम. वेरी इंटरेस्टिंग मैन. या आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इन लेंथ. अगर आपको अगर कुछ if you want to have given insights, please go ahead. Book name is Alchemy. The surprising power of ideas that don't make sense, by Rory Sutherland. Can you see? Amrut, we can open up questions, I think, now. Sure. Yeah, any questions, please? Right. So There immediately are we people have, whose hands are up. I think they will Yes. unmute them. yes. Parameshwar wants to ask. Just one request, all those who are unmuting, if they can switch on their camera also, it would be great. We can see the person who's talking. Yeah. I would love to see beautiful faces. Sir, want to join booklet. Vikas, would you like to answer this question? Amrut, Yes. Amrut, can I answer? Can I answer? Go ahead. Who is speaking? I am Dr. Parmeshwar Amrut. Hello, Parameshwar. Hi. Yeah. You were speaking about ideas, becoming more focused and focused. So I would like to share in healthcare, you see multi-specialty hospitals and single specialty hospitals, okay? Yes. For example, if a person wants an ophthalmology eye care, he will go to ophthalmologist. Right. If a person wants an orthopedics, he'll go to an orthopedics. If a person wants a pile surgery, he'll go to a pile specialist rather than going to a multi-specialty hospital. Right. So my own experience is I was doing all general surgeries, when I started my career. Then I became a laparoscopic surgeon. Then I found a blue ocean strategy where I found only, I will operate only 5 surgeries: piles, fissure, fistula, pilonidal sinus, and perineal abscess. That's all. Okay. When I did this, my business grew by 10x. Wow. I just want to add to your, the focused Right. approach Got to it. any business, Absolutely. So healthcare actually is moving towards a focused factory approach. Correct. An orthopedic surgeon will do only elbow joint. Somebody will do only knee joint. Correct. Yeah. So Right. thank you. You're right. Thanks You for the are ideas and bang on. great book. Great book. Thank you so There is much. also a very common joke in doctors fraternity. Yeah. कि ये ENT में I am specialized only on right ear and not left ear. ऐसा भी. Very true. Very true. Yeah. Yeah. True. Good. But So, one super caveat. specialty. Yeah. One misconception, misinterpretation could be when I kept saying that you have to be a super specialized guy. Yeah. That doesn't mean that you should not do different things. It's just that don't make everything that you do as part of your profile. I'll keep trying. I will keep studying other things. You should keep studying the entire anatomy of the body. Yes, But sir. don't let other people know about it, and your website should talk only about your specialization. Yeah, हम लोग टॉम नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं. Yeah. The study should go on. We will speak only. We do this, but when the patient walks in, we will tell. We will not do that. We will do that. Correct. We will not do the customer. Yeah, you got it. Very right. Point well So said. I must be doing many things other than books, but you will never come to know about it. Thank you. Let us know what else do you do other than books some other time. Yeah, sure. Okay. Thank you so much. Wonderful. Thanks, Dr. Parmeshwar. Thank you. आशीष, बिफोर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अनाउंसमेंट कर देते. काफी लोगों को इंटरेस्ट है अमृत जी की बुक समरी को पढ़ने के लिए, लेकिन उनको तरीका पता नहीं है. तो प्ले स्टोर पे जाना है, बुकलेट गाई ऐप डाउनलोड करना है. आपको एक की पूछा जाएगा, नेक्स्ट लेवल इज अ की. तो हर दिन आपको एक बढ़िया सा किताब मिलेगा पढ़ने के लिए. बहुत अमेजिंग किताबें हैं.
और जो मिशन का पार्ट जो बनना चाहते थे उनके लिए आसान तरीका है, जस्ट प्ले स्टोर पे जाइए, बुकलेट गाई ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको की पूछेगा कि इज द नेक्स्ट लेवल, और आप इस मिशन का पार्ट बन जाओगे। I want to add one more thing to Amrut. Please give me a chance. 1 second, I'll add. Amrut and Dr. Parmeshwar. I want to add. Hello. Yes, you can. Can I? Yeah. See, I am a doctor and I'm operating patients. If a patient is satisfied, when he goes back home, he will refer his friends and family. Okay. So nowhere in the healthcare industry they were, giving patterns to this. They were promoting the patients who are sending their friends and family members. So what I thought one day was, why don't I partner with Amrut and start giving some books as acknowledgements to them? So myself and Amrut together, now any patient who refers a patient to my hospital, a link will go to him. He will fill the form and send it. Within 24 hours, the 7 habits of highly effective readers book is going to them. The patients are so excited, and you should see the acknowledgements getting from that end, So like this is a new innovation, new idea where we engage the patient who are sending patients to us. And it's such a win-win situation, Parmeshwar. Yes. Booklet got financial help, and it's also helping your patients. Superb. And this is a brilliant idea. Thank you so much, Parmeshwar. It came as a lifesaver. You'll not be surprised. Many hospitals will come and copy this innovative idea. Many big corporates. Inshallah. Yes. Thank you so much, Amrut. Yeah, this I want to add and tell the group here who are participating. Thank you so much. Yeah, others can also take note of it. It is a perfect win-win situation. Yeah. Yes. Thank you, Amrut. Welcome. Yeah. So anyone else? We have Mr. Tushar Shah is there. Tushar Shah, you can ask your question. I'll unmute him. Yeah. Hello. Yeah, Tushar, go ahead. Yes, guys. So Tushar here. Hi. Glad to see a young face. Oh, thank you. So I have one idea before few months. I don't know. आपके लिए काम कर सकता है. The idea is कि जैसे for example कोई book पढ़ना start किया, right? और एक book पढ़ा और उस दूसरा book जब वो पढ़ रहा है उसके बीच में गैप है, काफी गैप है, right? और जो book उसने पहले पढ़ा और उसमें से उसने एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किया, राइट? माइट भी उसने जो पहला बुक लिया वो शायद जो पर्टिकुलर फील्ड में वो पढ़ना चाहता था, वो पर्टिकुलर टॉपिक पे वो पढ़ना चाहता था, उसके लिए वो जो फर्स्ट बुक लिया वो शायद गलत था. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई वुड लाइक टू रिलेट विथ अवर इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल कि किसी को फाइनेंशियल फंडामेंटल समझना है और उसने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, और जो पहला बुक उसने लिया वो ट्रेडिंग मेंटालिटी वाला लिया, जबकि वो ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया. बट जबकि उसको वेल्थ क्रिएशन सीखना था, he should start with psychology of money, then rich dad poor dad, and that way. Correct. Got it. So one of the idea is ki can we create something where what can be the sequence of reading a book in particular topic. जैसे मुझे अगर फाइनेंस पे पढ़ना है तो I should start first from here, then second, then third book. If it is health related, then first book, then second, then third. Makes sense. Yeah, very, very brilliant idea. Yeah. So I mean, just the hardship has been taken by me. So why you should reinvent the wheel? That's what you are trying to say, right? I have discovered by trial and error which book is the right at the right time. So why not use that knowledge for you guys? Is what you're trying to say? That is what I am saying. I have this idea even before you are there in Pathshala. Wow. I think this is putting me into a very pensive mood, and I'll really deliberate on it and try so to even work on I have it. tried to create one Excel where topic wise, book wise, कौन सा sequence में कौन सा book पढ़ना चाहिए वो सब. But I'm not the right person for the same. Very interesting. Amrut, also as a corollary to what Tushar said, let me just comment on this. Yeah. As an extension to this idea, having said, I like that idea. See, knowledge is not collection of information, it is connection of information, which we rarely talk about. Honestly, आज मैंने जितना भी 1 घंटा बोला need not necessarily be from the same book. मैंने बहुत अलग-अलग books से भी लिया है, but that is not the point. The point is finding connections
in disparate, unrelated things. Innovation comes by connecting random things. So Tushar, here the only downside is if I give you कि इसके बाद ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है. Our brain loves to categorize everything. No, this is fiction, this is non-fiction, this is self-help. But look at the structure of the brain. Brain कैसा है? सब कुछ एक दूसरे से connected. All the neurons are connected randomly. But we like everything methodical, everything categorized, labeled. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए. In fact, my to-do list, people try to categorize कि office के to-do list और घर का to-do list. No. If you have to do things, मेरा रहेगा कि summarize Rory Sutherland's book. दूसरा item रहेगा buy चाय पत्ती from grocery. It's all in one list. All right. Why categorize? वो सिर्फ हमको हमारा fascination है. All right. So I'll give you an example. 10 years ago, when a guy came out with an idea to put a camera in a mobile, he was sacked by his boss to come out with such a stupid idea. Can you believe this? And I can empathize with that boss. Had I been in his shoes, मैं भी बोलता था क्या stupid idea है. Camera is a dedicated device. Why would people bother to click pictures from their mobile phone? But we know the reality today. Yeah, we take more selfies than calling. So innovation is finding relation in random ideas. Now let's extend this idea. Let's make it become more stupid. How about putting a camera in a fridge? Sounds stupid? Let's try to make a sense out of it. Nowadays, juvenile diabetes, 14-year-old kids are having diabetes and blood pressure. And most of the parents are working parents. Mom, dad, both go to offices and kids are left alone at home. How about putting a camera in a fridge, which will keep a watch on the eating habits of the child. And whenever the child opens the door of the fridge, it will take pictures and videos and send it to the parents on the mobile, so that they can keep a check on their child's eating habits. Now it makes sense. See, अभी बैठे बैठे मैंने कैसे random दो ideas को जोड़ के एक नया idea. Never know such fridges will be a reality in the market. अगर इस field में कोई है तो please take this idea. I won't charge any royalty. Take it for free. Yeah, next question. So the next question we have is from Mrs. Sumati. Yeah, hi Sumati. You will have to unmute, ma'am. Yeah, Sumati, go ahead. Hello. Yeah, Sumati, go ahead. I can hear you. Yeah. First of all, I have to thank you, Amrut, for this wonderful session. Thank you. You know, Sumati has always been a silent admirer of Booklet Guys. Thank you so much for coming. Yeah, I have met you in last Independence Day. And now it's Republic Day. Wow. Yeah, it's a connection. I want to tell one thing. I told you I have a library in my class. My students arranged that. Now we have 50 books in 8th book world. Wow, so started on September 5, Teachers Day. Super. You know, first of all, that is not a big success. After 5 or 6 months, we have 3 libraries in 3 classes. Super. All the students are carrying that boxes. Great. We have this library with, I sent you the video with light set. And another innovation, some students told me we will get 50 books in 1 month. I said, how can you do that? You know what they did? They write some stories and put it as a book in their library. Now they have 50 books in 1 week. Wow. You made my day, Sumati. So we have new ideas from kids. Really? You have Super. to connect more kids and children. You have to meet school children and you have to make them study more. After this library idea, their perception and their ideas, everything changed. Super. That's the reality. I mean, such things, tickles my fancy and encourages me to work hard on such in the world of Instagram distraction, talking about reading and books.
is so unconventional. In many meetings, other teachers told me, no, these times students only they are in Instagram, they can't read. Your idea is stupid. You can't do all these things. What is this? A box and books carrying that. A girl told me, all the students are mocking at like that. You are like a beggar. Why are you carrying this box? Now there are 3 boxes in the school. Yeah, wow. Superb. Excellent. You Updated restored my version of library. confidence. Thank you. Yeah. Thank you so much. So they read and they are making books, creating Superb. books. Great, That is great. Ashish, Happy it's reading. 8:35. Yeah, can we take this as a last question, please? Yeah, Yeah. Sure. So, Pranav, could you please unmute? Okay, I think Pranav. he has redacted his hand. Amrut, Okay, perfect. I just have a comment. Nothing, any ideas. Really, we loved your speech, and really, it's encouraging. And actually, I'm telling my kids also to, be, reading books and do more of, make Thank this you. idea more, Yes. popular. Who is speaking this? The sounds, the This voices. is Ramaswamy with you. Oh, Ramaswamy. Yeah. Again, a silent contributor. Thank you so much, Ramaswamy. Thank you, man. Thank you, man. Take care. All the best. Yeah. Some people are also bidding. Ashish, I'm Right. not able to read the chat. So, are they bidding for the book? So yes, we have a couple of bids for 1,000 rupees. For Wow. I would love to give my copy. So, thank you so much. It's also financial help for the mission Make India Read. Ashish, we could just note down the people who have bid the highest, so that I can get in touch with Sure, them. I think it's only Mr. Jayagowda who has made the bid. Mr. Jayagoda. Yeah, but somebody else might just bid now. Right. All right. Awesome. What a Okay. great Republic Day spent. I think we have 1,500 by We have 1,500. Wow. Hegde. Super. Thank you. Okay. Prakash Hegde, Ashish, remember the number. Yes, sir. Cool. Let's call it a day, please. Perfect. So with that, we come to an end for today's financial Pathshala session that is on the power of ideas. Before I hand it over to Shreya, I would just like to give one small reminder that there is a application called the Booklet app that is available on the iOS App Store and also on the Google Play Store. You can download it. It will ask you for a key, and that key is next level. So you need to type next level for your access to the Booklet app. And trust me, it is going to be a life-changing activity that you're going to do, because you are going to become a part of something that is much greater than all of us. It is the mission to make India read. And more important than that, there is one saying which goes like this, that if something is stupid, but it works, it is no longer stupid. So that is a small learning that we can take from today's session. Yes. And I hand it over to you, Shreya. So one of the most famous movies was Three Idiots. Yes. Yeah. Every idea is a stupid idea until it is a hit. Exactly. And also every fourth Thursday is going to be a similar interaction with Amrut over here. The booklet guy in flesh is going to be there, in flesh in his location, you all in flesh in your location, but meet up virtually through Zoom. So I request all of you who are joining today, who are a part of this mission, you can spread the word around and you can invite more and more people to make the best of this occurrence that happens on every fourth Thursday of the month. So with that, we come to an end of this session. Just call your clients. You don't need to, you just call your clients for this. It's a beautiful session. Your clients will be very happy to have this kind of an experience. Right. Okay. Thank you. Yes, sir. Thank you so much for the session. I think it was like amazing and it was phenomenal. And we still have people joined with us. Like we have crossed our usual time, but still we have, that shows the that how powerful ideas were these. And thank you. Last line of the collection. It's not about collection, but it is about the connection of connection. Yeah. Is actually thank you. Shreya, I always love your energy levels and your enthusiasm, and your birthday party is still pending. Okay.
Thank you so much for listening to me patiently. Happy Republic Day once again. And bye-bye. Good night. Have a great. Today we couldn't hear you. Can you close the show? Yeah. So I was saying